Thank you. Now this part with the capital budget, this capital receipts we are going to start today. Yes. Now please see the upper part of this slide. Now, firstly, what are capital receipts? Okay, so capital receipts के case में we need to have one condition fulfilled. What is that? We can define capital receipts are those receipts which either create a liability or reduce an asset of the government. Pay attention to the word. Either create a liability or reduce any asset of the government. If any one of these two conditions gets satisfied, then that receipt will be known as capital receipt. Now, for example, later on we do the sources. For example, government takes any loan from anyone, may it be public of the country or a foreign country, anything, anyone. When government takes loans, that means that has become a kind of responsibility, liability for the government. So it will be known as capital receipt. Okay. On the other side, if government sells its any public sector undertaking, full-fledged sale कर देती है, then again asset has got reduced. When public sector undertaking is being sold by the government, in a way that means now government has no more control over that asset. That has got dissolved. वो खत्म हो गया, एक बार sale कर दिया, that has got dissolved. That means money has come, but asset of the government has got reduced. वो कम हो गया, ठीक है? So if any of these two things can happen, either there should be this reduction of asset or there should be creation of a liability. दो में से one thing should be there. So if this type of thing takes place, means in this manner money comes to the government, government receives that money, so then it is known as capital receipt. Now please try to compare. पहले क्या था, revenue receipt में क्या था, उसमें हमने क्या था, neither create a liability nor reduces asset. ठीक है, अब यहाँ पे उसका opposite है, either creates liability or reduces asset. ठीक है, दोनों मतलब both are different in that way. Now, what are the sources? Means how does this money of capital receipt, how can it come to government? कहाँ से आएगा? What are the sources? Now, three broad sources are there. One is called borrowings, second is called recovery of loans, and third one is called other receipts, right? अब now what are the meanings of these borrowings? ठीक है, borrowing का मतलब होता है लोन, किसी से लोन लेना, उधार लेना, क्रेडिट लेना, ठीक? So when government borrows money from anyone and does its work, whatever responsibilities are there, जो भी काम करने हैं, government does that work, performs its actions with the help, functions with the help of that borrowed money, that means that is a kind of capital receipt. Now what happens when money is borrowed, but what gets created? Liability. ठीक है ना, क्यों होता है? बिकॉज बोरोड मनी इज ऑलवेज टू बी रिटर्न्ड. ये कोई फ्री का गिफ्ट नहीं है कि जिसको वापस नहीं करना है. इट इज टू बी रिटर्न्ड विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, and along with that moreover interest is also to be paid. So whenever money is borrowed by the government, that means it is a capital receipt. Why it is a capital receipt? Because it is creating a liability for the government. ठीक है, आपने डेफिनेशन को याद रखना है, उसमें देखना है. हमने कहा था टू में से आउट ऑफ टू वन कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड. तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी हो रही है व्हेन देयर इज बोरोइंग. ठीक, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दीज बोरोइंग्स? From where, from which sources government can borrow? So further three sources are there. Means three places are there from which government can borrow. First is public. Now which public? Public of the country. Like for example, Indian government wants to borrow या borrows money from Indian people, we people of the country. So we are known as public. ठीक है, public मतलब people of the country. So government of the country, any government can borrow from the people of its own country. लोगों से उधार ले सकते हैं. So when money is borrowed from the public of the country, then popularly it is known as public debt. Many places you will read the word public debt. Public debt matlab that debt, that borrowing which has been taken by the government
of the country from its people, from its citizens. Okay, so money can be borrowed from the public of the country. तो first source हो गया borrowing का. Second is RBI. Now RBI I have written here in this in case of example of our own country. Otherwise in a way it means central bank. ठीक है ना. तो एनी गवर्नमेंट, सिंस वी आर टॉकिंग विद रिगार्ड टू इंडिया, तो हम इंडिया की बात ही कर लेते हैं. अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट हो तो यहाँ पे वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड विद सेंट्रल बैंक. नाउ जो गवर्नमेंट है इट कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, एंड इन आवर कंट्री विच इज द सेंट्रल बैंक RBI. तो जब भी गवर्नमेंट को जरूरत हो, अब ये कहाँ से लेना है, इट इज द विश ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम पब्लिक. Secondly, government has other option. It can borrow from the central bank of the country. Now, चाहे सेंट्रल बैंक से भी बोरो करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक भी अपना है और गवर्नमेंट भी अपनी है तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनी. नो, whether it is borrowing from the RBI, still it is a liability. Government is supposed to return that money to RBI. ये नहीं हम कह सकते कि अपना ही कंट्री है तो कुछ भी नहीं बना. नो, चाहे किसी से भी वो लोन लिया है, किसी से भी बोरो किया है, it is to be returned. So again, whether government borrows from RBI, still it becomes a kind of liability on the part of the government, right? Then third one is government can borrow from foreign sector. Okay, I have written here only one word, foreign sector, but in your book 2 points have been made. Now foreign sector comprises governments of the foreign countries, means foreign governments, or it may also include international institutions. ठीक है, जैसे for example बुक में 2 points are made, no problem, आपकी मर्जी है, in any way you can write. Now for example, Indian government borrows money from British government, मान लो, ठीक है, तो वो एक कंट्री की गवर्नमेंट है, तो अगेन इट इज ए लाइबिलिटी, दैट इज मनी इज टू बी रिटर्न. और सेकेंड ऑप्शन कैन बी विद गवर्नमेंट, कैन बी देयर विद द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. नाउ वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. It does not belong to any one country, है. It is not the, there is not the ownership of a single country on this World Bank. It is of the whole of the world. Similarly, government can borrow from another international monetary fund, IMF, जो popularly known as IMF. तो it is wish of the government, requirement of the government from where it wants to borrow. ठीक है, तो both come under this, whether foreign governments or foreign international monetary institutions, both can be given, both can be mentioned under this heading of foreign sector. Okay, so government has these three options. From here government can borrow. Now again I am repeating, this thing needs to be repeated. Whenever government borrows from any of these three sources, then it becomes a liability. Liability मतलब obligation, responsibility. क्या responsibility है कि over a given period of time, मतलब for what period this loan has been taken, it is to be returned. ठीक है, now that's why it is a kind of this capital receipt. Now second is recovery of loans. Now very interesting, recovery of loans का meaning है कि when government, now government of the country, here we are talking, unmute yourself students. So recovery of, anyone student has not unmuted, please I request you to mute yourself. So जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट प्रोवाइड्स लोन्स टू द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट कहे कि हमें ज़रूरत है, वी आर इन नीड ऑफ मनी, तो हमें सेंटर से लोन लेना है, तो पंजाब गवर्नमेंट कैन टेक लोन. Similarly, Tamil Nadu government can take loan. Any of the state government is in has this provision, has this facility to take loans from the central government whenever they are in some specific need. ठीक है, तो ले सकते हैं obviously. But जब that loan is recovered, means for example Punjab government has taken loan for 5 years, तो during those 5 years तो that loan is a kind of asset for the central government. ठीक है ना, जो देता है उसके लिए वो एसेट है, उसका एक वेल्थ है कि उसने किसी को लोन दिया हुआ है, तो उसका उसके लिए वो एसेट है. ड्यूरिंग दोज 5 years तो दैट वाज एक्टिंग एज एन एसेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लोन का अमाउंट था. बट नाउ थिंक कि 5 years have got completed, duration has got completed, now Punjab government has returned that money. In other words, the same thing can be spoken as कि central government has recovered its loan from Punjab government after 5 years. अपना लोन वापस ले लिया. Now when loan has been recovered, loan amount has been taken back, now will it remain, still remain an asset for the central government? बताइए.
जब वापस ही ले लिया, अपना दिया हुआ मनी वापस ले लिया, तो अब थोड़ी एसेट रह गया, नाउ इट इज नो मोर एन एसेट. सो दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज मेंट फॉर दिस टर्म कि रिकवरी ऑफ लोन्स मीन्स व्हेन लोन इज टेकन बैक, इट इज रिकवर्ड, वापस ले लिया जाता है, तो देन money comes to central government. Now but what has happened now, again think about two condition. अब क्या हो गया, money has been taken back, तो government का asset खत्म हो गया. तो हमारी definition क्या थी, capital receipt is that receipt which either create a liability or reduces an asset. Now in this second case what is happening, reduction of asset is taking place, कि जो चीज पहले एसेट थी, नाउ इट हैज कम टू एन एंड, इट हैज गॉट रिड्यूस्ड, अब खत्म हो गया. क्यों फिनिश हो गया, बिकॉज इट हैज बीन टेकन बैक. सो अगेन दिस एग्जांपल इज ए काइंड ऑफ कैपिटल रिसीट. ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, लाइबिलिटी वाज बीइंग क्रिएटेड. See, out of two, one condition is to should be satisfied. दोनों simultaneously, both are not required. And in this case, what is happening? There is reduction of asset as it has been recovered. ठीक है. Now third one is other receipts. Now other receipts का meaning है कि leaving these two aside, मतलब leaving borrowing, leaving recovery of loan, whatever other options are left with the government, so they all come under other receipts heading. Now what are those? Very interesting. One is disinvestment and one is small savings. Okay. Now disinvestment, I hope you remember we have already done one chapter, new economic policy, उसमें privatization topic was done. तो disinvestment क्या होता है, when government of the country sells a part या percentage of its shares in some public sector undertaking, when those shares are sold to some private sector entity. अपनी property का that part which is sold by the government to this people of private sector या private enterprises. ठीक है, तो that means up to that part now there is disinvestment. Now I give you example. For example, I can see Vasundhara on my screen. वसुंधरा के पास मान लो 10,000 रुपीज के बराबर कोई प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब इसने उस 10,000 में से 2,000 के इक्वल अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी. मान लो कोई लैंड है, कुछ भी, एनीथिंग, यू कैन थिंक अबाउट एनी एग्जांपल. 2,000 रुपीज के इक्वल अपने इसने अपने प्रॉपर्टी का दैट पार्ट वो सेल कर दिया. अब वो पार्ट क्या कहलाएगा, डिस इन्वेस्टमेंट. मीन्स नाउ शी इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 8,000 एंड वर्थ रुपीज 2,000 सिंस शी हैज सोल्ड हर शेयर, अपना पार्ट सेल कर दिया है. दैट मीन्स व्हाट हैज टेकन प्लेस, डिस इन्वेस्टमेंट. किसके लिए हुआ ये डिस इन्वेस्टमेंट, फॉर वसुंधरा. ठीक, नाउ रिप्लेस वसुंधरा विद गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. तो व्हेन गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री सेल्स सम परसेंटेज ऑफ इट्स शेयर्स, कहाँ के शेयर्स, शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, व्हेन सम पार्ट इज सोल्ड, किसको सेल किया जाता है, टू प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जितना पार्ट सेल किया है उतने पार्ट के लिए एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज गॉट रिड्यूस्ड. अब उसके ऊपर थोड़ी ओनरशिप रह सकती है कि अब हम दोबारा से उसको सेल कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो वट एवर पार्ट हैज बीन सोल्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स अप टू दैट पार्ट, अप टू दैट प्रपोर्शन, एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज गॉट रिड्यूस्ड. कम हो गया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उतने पार्ट तक के लिए. सो ऑल्दो मनी हैज कम, money is received by government, but that is reduction due to reduction of asset. ठीक है जी. Then next is small savings. Now small savings में it is mainly related to post office small savings. Now post office में जो खास करके होती हैं, अब post office में गवर्नमेंट जो है वो encourage करती है लोगों को to save their income, to save some part of their income. If they are unable, means all people, all types of people are there in the society, all cannot save in huge amount, so as per their income level people save. So government tries to encourage people कि आप थोड़ा थोड़ा जितना भी आप you can do, you should come to post offices. Various types of schemes are announced by the government. जैसे वेरी पॉपुलर स्कीम्स आर देयर, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लाइक किसान विकास पत्र, और पहले होता था काफ़ी टाइम पहले इंदिरा विकास पत्र, और NSCs, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. So this type of means with the help of post offices, various schemes are declared and announced by the government. So people are encouraged to bring their money. Now when small savings are coming, people save, we ordinary people go to post office and save our money. ठीक है, और मान लो 5 year के लिए, 10 year के लिए, as per the duration of the scheme. तो हम बड़े खुश होके घर आ जाते हैं कि now 10 years के बाद हमें इतने % इंटरेस्ट के साथ we will get back our money.
ठीक है। तो अब जब वो 10 ईयर बीत गए, जितना भी टाइम था, नाउ आफ्टर दैट टाइम वी आर इन ए पोजीशन टू गेट अवर मनी बैक। हम अपना वो सर्टिफिकेट लेके वी गो टू पोस्ट ऑफिस और कहते हैं जी हमारा मेच्योरिटी पीरियड हो गया है, अब हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। ठीक है। अब वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिटर्न दैट मनी? दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट whatever money is saved in the post offices, that is utilized by the government for various kinds of activities. पोस्ट ऑफिस अपने पास वो स्टॉक करके नहीं रख लेते हैं, गवर्नमेंट उसको यूज करती है। ठीक है। तो अब नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिटर्न दैट मनी। नाउ स्मॉल सेविंग्स आर ए काइंड ऑफ, बताइए अब आप, ये एसेट है, रिडक्शन ऑफ एसेट है या क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी है? क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। जब भी हम किसी का पैसा यूज कर रहे हैं, मनी यूज कर रहे हैं, तो इट इज ए क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। पता है कि इतने टाइम के बाद इट इज टू बी रिटर्न, मना नहीं करेगा कोई भी, या कर ही नहीं सकता है। सो स्मॉल सेविंग्स व्हेन मनी कम्स इन दिस फॉर्म टू द गवर्नमेंट, देन इट इज ए काइंड ऑफ क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है जी। सो बोथ ऑफ दीज, नाउ स्मॉल सेविंग्स के लिए बस एक ये आपने याद रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन द विशेज ऑफ द गवर्नमेंट। आप या मैं, हमें कोई जबरदस्ती, nobody can compel us to go to post office and save. It mainly this source, that's why it does not constitute a major part of the capital receipts. It is a मतलब एक we can say secondary part, because people cannot be compelled, है ना, लोगों की मर्जी है, they want to go or they don't want to go for this side. So it constitutes a very little part of the capital receipts, so much attention is not paid to this. Most of the time when these names of capital receipts are written, you would have seen in other books also, mainly but these three names are given: borrowings, recovery of loan, and disinvestment. But you may give this name also, means it is also one of the part, although minor part, but it is also one of the parts of capital receipts. Okay. After this, now we have to distinguish between the revenue receipts and capital receipts. Now we have gone through the meanings of both the terms. Now 3 or 4 points as per the marks we can make. Number 1 के ऊपर you have to draw a line in the middle. Number 1 पे you can give both the definitions, one side revenue receipt, second side capital receipt. Then another line I think that I have not told, जो revenue receipts हैं, they are regular and recurring in nature. Regular and recurring का मतलब होता है frequent. जैसे खाना खाते हैं हम लोग, मॉर्निंग में भी खा लेते हैं, दोपहर में भी खा लेते हैं, इवनिंग में भी खाते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, अगले दिन फिर खाना शुरू कर देते हैं, है ना। रेकरिंग, बार बार, जो काम बार बार होता है, दैट वर्क विच गेट्स रिपीटेड फ्रीक्वेंटली। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट रिसीट्स हैं, दे कम टू गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन। एवरी ईयर गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस, एवरी ईयर मनी कम्स टू गवर्नमेंट, एवरी ईयर गवर्नमेंट रिसीव्स मनी इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, कुछ ना कुछ आता ही है गवर्नमेंट के पास। तो these are, that's why they are also known as recurring and regular in nature. But जो capital receipts हैं, they are not recurring and regular. क्यों regular नहीं है, क्यों recurring नहीं है? Because borrowing is not a permanent feature. Every time annually government does not borrow. Borrowing takes place when it is required. हर समय थोड़ी हम किसी से उधार लेते हैं कि चलो रोज ही जाएं या हर साल जाएं. It's not necessary. Means it is once in a while as per the requirement. Similarly, recovery of loan, it is also not recurring and regular. Recovery of loan can be done only when the loan period gets over. तभी कर सकते हैं ना, पहले तो नहीं ले सकते. Similarly, disinvestment and small saving, ये भी कोई रोज रोज नहीं होता है कि रोज ही गवर्नमेंट अपना कुछ सेल कर दे अपना पार्ट. Not a routine practice. So that's why in short it is written कि जो capital receipts हैं, they are not regular and recurring. ठीक है. Then number 3 पे you can give examples of the sources. Here you can mention tax and non-tax with few examples. Then on this side capital receipts example में you can mention these names: borrowing, recovery of loan, and other receipts. In this manner, means as per marks you can develop the points 3 or 4. Now next is, second is, अभी हमने किया budgetary receipts. Now second part which can be analyzed, that is budgetary expenditures या budget expenditure. Now budget expenditure means those estimated expenditures of the government which are to be incurred in the coming financial year. Okay, if you are asked about the definition, so then we can define कि भाई budget expenditures are those expenditures with estimated expenditures which are to be incurred by the government in the coming financial year. Now what are its two types? Again, one part is can be called revenue expenditure, second is capital expenditure. Now let us come here. Now these are very brief and simple. Now revenue expenditure means that expenditure
which neither creates any asset nor causes reduction in any liability of the government. I repeat, which neither creates any asset nor causes reduction in the liability of the government. सिंपल वर्ड्स में इसको हम ऐसे वी कैन अंडरस्टैंड, आप या मैं, नहीं आपका एग्जांपल लेते हैं, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, आप शाम को जाते हो बाहर कहीं एंड यू जस्ट बाय आइसक्रीम, वहाँ खड़े होके आप आइसक्रीम खा लेते हो, दूसरे दिन फिर आप जाते हो, आपको आपको रोज़ ही दिल करता है कि चलो रोज़ ही थोड़ा सा आउटिंग करें, बाहर जाएं, हैं कुछ खा पी के आ जाते हैं. नाउ यू आर स्पेंडिंग मनी. Now think carefully, आपने the money which is being spent by you on ice cream or something else, any eatable you want to enjoy, so the money which is being spent on that, अब is any this asset is being created with that money? कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, आप खा पी के आ गए हो बाहर घर से घर पे, ठीक है, नो एसेट हैज गॉट क्रिएटेड. Similarly, you have spent money on ice cream or anything else, but any of your liability has not got reduced. वसुंधरा ने मौली गुप्ता को 50 रुपीज़ वापस करने हैं और ये शाम को आइसक्रीम खा के आ गई, तो मौली गुप्ता के जो इसने 50 रुपीज़ वापस करने हैं वो लाइबिलिटी फिनिश नहीं हुई है ना, वापस तो किया ही नहीं है. सो इसका मतलब हो गया कि दैट एक्सपेंडिचर जिससे ना तो हमारा कोई लाइबिलिटी फिनिश हो रही है, पूरी हो रही है, और ना ही हमारी कोई एसेट बना, कोई प्रॉपर्टी वेल्थ कंट्री का कुछ भी नहीं बना, बट दैट एक्सपेंडिचर इज टेकिंग प्लेस, वो खर्च हो रहा है, बट ना तो एसेट बन रहा है ना ही लाइबिलिटी कंट्रोल हो रही है या फिनिश हो रही है. तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. नाउ व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ दिस? नाउ एग्जांपल कैन बी like for example every month government pays salary to government employees, हर महीने देते हैं compensation of employees जिसको हम बोल सकते हैं. Now every month that salary is being paid, but the payment of that salary is not at all creating any asset nor not at all reducing any liability, कुछ हो नहीं रहा है, but we can't say कि that expenditure is not required, that is also required for the normal routine functioning, वो भी चाहिए. Similarly, second example which I can take from your book, that is pensions. Here pension मतलब old age pension, transfer payment जो होती है for help of poor people. Now lot of money is being spent by government for helping the poor old people of the country. In the form of pension, money is being transferred to their accounts. Now this pension amount, government is spending money, but that money is not creating either like any asset nor reducing any liability. ठीक है, हर एक एग्जांपल के साथ you can use this condition. ठीक है. देन अनदर इज एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं जैसे जो ऑफिसेज होते हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर है, या गवर्नमेंट के रूटीन जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, जुडिशरी है, ऑल दीज थिंग्स आर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स ऑफ द कंट्री. So expenditure on all these items, that is a kind of revenue expenditure, because it is not reducing the liability nor it is creating any asset. ठीक है. देन नेक्स्ट इज, बस इसका इतना ही है बेटे, आगे कोई फर्दर डिटेल्ड सोर्सेज आर नॉट देयर. नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज hardly 8-9 minutes are there, so I am trying to finish the meaning of this, very simple and short meaning. Now capital expenditure means that expenditure which either creates an asset, उसका रिवर्स कर दें, either creates an asset or causes a reduction in the liability. ठीक है, दो में से एक चीज आपने याद रखना है. जब रेवेन्यू टर्म होती है तो two things should happen simultaneously, but whenever any capital concept is there, whether receipt or expenditure, any one of these two things should happen. So that expenditure which either creates an asset for a country, for the country, or reduces liability, okay, that expenditure will be known as capital expenditure. Now for example, Indian government has purchased, now मान लो any machinery from America, ठीक, तो what is it? Money is being spent, खर्च हो रहा है, बट वो मशीनरी क्या हो रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक एसेट बन रहा है हमारे कंट्री के लिए. ठीक है. Similarly, government has मान लो borrowed, government has made the payment of a loan to American government, and loan was taken 10 years back. Now that loan amount is being given back. Now what has happened? क्या हो गया? पैसे तो खर्च हो रहे हैं, बट हमारी एक लाइबिलिटी भी खत्म हो रही है, जो देना था हमारा
देनदारी थी, that is also coming to an end. So similarly we can take example like government spends money on the construction of roads, railway stations, or koi airports, something like that, any infrastructure work. So again that is a kind of creation of asset, because all the infrastructural activities, they are a kind of asset for the country, है ना, उससे काम आगे आता है या advantage होता है. So all these types of expenditures are known as capital expenditure. ठीक है. Then we have to compare the two. Revenue expenditure, again meaning here, then capital expenditure side meaning, then you can mention the examples, because इसमें we will not get more points, only 2 points will be there, definition, and second point पे examples can be given. ठीक है जी. Okay, now just a minute, let me stop the sharing.